పల్లె పల్లె నేను చేసుకున్నాను. నేను పెడతాను. హలో. హలో నితీష్ షా. Hey, hi Gijaf. Sir, can Hi you Raju. speak in more in English, sir, not Hindi? Yeah, definitely I can do that. Yes, But sir. again, Raju is there with you, and Raju is not comfortable at all with English. So either I'll have to do it like English and Hindi both means. Yes, yes, sir. ठीक है राजू चलेगा राजू hello guys allow me few minutes we'll start the lecture 20 minutes after Oh, at oh, 9:15. So okay, fine. meanwhile please answer whatever you need. Okay, Okay, sir. thank you.
Hello, hi guys, good evening. Hello. Hi, sir. Good evening. Very good evening. Uh, okay. Yeah, good evening. Hi Rajesh, good evening. How are you all doing? Yeah, good. That's great news. Okay, so by the way, this thing, access system credentials. Did we got system credentials? Yes, sir. Yes, sir. I got. Okay, Yeah, did we you got. try to log in? Yes, sir. I already installed. Be able to, okay, so Girija, can you be able to log into SAP? Yes, sir. Yes. Good, wonderful. Who else? Rajesh, what about you? Yeah, I have also logged in. Good. Niruti? Niruti? Raju? Guys, please speak up and let me know exactly who are able to access and who are not. हेलो Yeah, Niruti, please. Niruti, can you please like, हाँ let सर me हिंदी know? में हो सकता है Yes. इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है पूरा Okay. SAP एक्सेस कर पा रहे हो SAP? हाँ हाँ ऐसे भी किया इंस्टॉल किया मैंने इंस्टॉल क्या करना था? अच्छा वो आईडी पासवर्ड ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप के. ओके. राजू, व्हाट अबाउट यू? राजू? यस सर इंस्टॉल हुआ सर हो गया? लॉगिन करके चेक यस किया? सर लॉगिन करके? हाँ सर हाँ हो रहा है ओके, सुमित? सुमित? शुभम? हेलो शुभम? गाइस प्लीज स्पीक अप. हेलो. गाइस बोलो यार प्लीज. ओके, हिमांशु भागवत. Yes, sir. हिमांशु, आपको मिला है क्रेडेंशियल्स मिले? Yes, sir. I got that. कैन यू एबल टू एक्सेस SAP? Yes, sir. ओके, भागवत? Okay, no worries. I hope everyone got that if you are not responding. We log in. Let's start with SAP. Get the attendance. Okay. So,
Hello guys, I hope you can see my screen, right? You see my screen? No, Screen sir. is visible. Screen is visible, but data is not there. Screen is there. Huh. Sorry, data is not visible. Yes, sir. No. Only your screen is there, but nothing is visible of the data. Let me do it again. How about now? Yes, sir. Yeah, it's okay. So guys, I hope that everyone got this actually remote desktop credentials, okay? Yes. And two credentials you must have got. First is remote desktop and second is SAP, I think, right? Yeah. So after connecting to remote desktop, the first and important part we need to do is in the part of that is just a second. Your voice is having some problem. It's breaking. It's breaking. Yeah. Right. That could Interruptions be are there. और issue. Guys, is this issue with same that सबको मेरी आवाज खराब like not clear नहीं आ रही क्या? Hello, Girija? Yes, sir. आ रही है सर. Am I audible? Yes, sir. Yes. No, it's fine. Oh, good. Okay, so guys, what's happening here? So guys, to access SAP after coming to your remote desktop and all, to access SAP, there's an application, to do that. I hope few of you remember, like know that, and few of you does not. So this application SAP Logon. This is the one which we need to connect to SAP. But for that, this must need to install before that. But in our case, or maybe in your case as well, this is already installed. Okay, like we don't need to do any setup or anything. So if you see here, these many settings, these many things are already we need to install as part of setup. So in our desktop, C disk file, there this is basically RAM, laptop RAM we have, and under that we have certain applications, certain files we need to install, and that those files are already we get from our IT team or somewhere, the responsible team who basically install the certificates of software and all. Okay, so in this case, we already have everything, and as part of that, we have this logon already installed in our system. So let's not go into technicality. So important thing is that this is the only way, okay, in case of SAP, either ECC, Business One, or SAP S4 HANA, any of the software, we can log in through this only. First of all. Second, there's one more things came in the picture latest, which is SAP S4 HANA Public Cloud. And for public cloud, we do not need this application. So what I mean is that for public cloud, there are some links we get online. Okay, like online means that we can access that through Chrome or any web browser. So to repeat the same thing in Hindi, I think people who are not able to understand in English. So guys, SAP जो है that we can access using this application. इस application एक app है जिससे हम basically SAP access कर सकते हैं. Okay, if you double click on that, ये इसका वर्जन है, this thing you can see, ये जो चीज है this 770, ये वर्जन है. So this is the latest version अभी जो भी हमारे पास available है. Okay, this is the latest one by now. And under that, if you log into that, यहाँ पे हम क्या करते हैं, connections डालते हैं. So there is no connections. जब आप नया setup करोगे या when you install that first time, there will be nothing at it. It will be completely blank. But for this connection, we get this connection from our team, as I said, from our IT team or from the basis team who takes care of the installation part. So हम उनसे डिटेल्स लेते हैं. क्या क्या डिटेल्स लेते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, देखो जब भी कुछ ऐसा बनता है तो नया कनेक्शन बनता है, यहाँ से नया कनेक्शन क्रिएट होता है, दिस न्यू. सो वंस यू क्रिएट न्यू, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देते हो कि आपका क्या सिस्टम है. सपोज करो S4 HANA है, HANA में भी कौन सा है, डेवलपमेंट है. अच्छा गाइस, हमने ये पढ़ा है क्या, डिड वी स्टडी अबाउट डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सर्वर, दैट हाउ व्हाट इज द सिस्टम आर्किटेक्चर वी हैव? नहीं सर, ऐसा कुछ No, नहीं पढ़ा सर. no, sir, नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ.
ओके सो गाइस चलो इसको उसको थोड़ा डिले करते हैं। इससे पहले एक चीज समझते हैं और बेसिक आइडिया समझते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। थैंक्स। टेक अ चूज। देखो इस तरह से होता है। दिस इज व्हाट हाउ पब्लिक क्लाउड लुक्स लाइक। आपको दिखाऊंगा अभी। आई हैव द एक्सेस माय पर्सनल लैपटॉप। आई विल शोकेस इट टू यू। बिफोर दैट लेट्स गो। सो यू नो गाइस इन SAP, so let's okay, एक minute. So again, as of now, let's go step by step. So first thing is that this is the only way to log into SAP, as I said. If you double click on that, this will tell you the release. So this is the latest release we have for GUI Windows and also for iMac. Like if you have somebody have Apple laptop, in that case वो Apple के लिए भी आता है। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है जो भी है? करेक्ट? Yes. कुछ डाउट है? Anyone? Yes, sir. Language? Clear है सर. ठीक है। सर अब जो what I वर्जन बोले तो वर्जन में ऐसा कुछ दिखाया नहीं सर, 23-24 ऐसा कुछ पिछली बार बताया जो आपने। वो वर्जन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आई कम टू दैट पॉइंट एज वेल। वो जो चीज है ना वो इसका वर्जन है। देखो ये जो चीज है ना, ये इस एप्लीकेशन है, ये इसका वर्जन है, ना कि SAP का। ये जो एप्लीकेशन जिससे हम एक्सेस करते हैं, दैट वर्जन, दैट 1770 वाज दैट एप्लीकेशन, इस ऐप का वर्जन है। और ये जो चीज है ना हमारी, इसका वर्जन, ये हमारा S/4HANA सिस्टम है, इसको हम एक्सेस का वर्जन होगा हमारा, जो 2022, 21, 15 जो भी हमने पढ़ा था वो, है ना। ओके ओके। अब इसमें भी जनरली ये सब, अब देखो हमारे केस में तो ऑलरेडी डली हुई है, आपके केस में भी ये लिंक वहां पे ऑलरेडी होगा। बट व्हाट आई प्रोग्राम ट्राइंग टू शोकेस टू हियर इज दैट जब हम पहली बार एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे व्हेन वी गो टू क्रिएट, यहाँ पे हम सिस्टम का नाम डालते हैं कि सपोज S/4HANA डेवलपमेंट, या इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट क्वालिटी और प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। देन एप्लीकेशन सर्वर होता है, इसमें कुछ टेक्निकल नंबर होते हैं। देखो जैसे अभी ये मैं आपको इसको एडिट में करके दिखा देता हूँ। ये लोग यहाँ से हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे डिटेल डालते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज में जाओगे ना तो आपको वो चीज दिख जाएगी। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर, मतलब IP एड्रेस वगैरह जो होता है ना, you must have heard this term IP address, right? So these are the server details basically, that where the server is and from we are accessing this data. ये उसका इंस्टेंट नंबर, ये टेक्निकल आईडी। सो ये हमारे लिए कुछ ज्यादा काम की नहीं है, जस्ट टेलिंग यू these details we get from our IT team to make sure that we connect to our company's system. मतलब SAP तो बहुत सारे, राइट, है ना। SAP के अलग अलग कॉपीज है, अलग अलग SAP एक ही है, लेकिन हर क्लाइंट के लिए अपना अलग अलग SAP का कन्वर्जन क्रिएट होता है, करेक्ट। सो उसमें अपना जो है, अपनी कंपनी का, आपकी कंपनी का, मेरी कंपनी का जो क्लाइंट है उसका, तो दैट विल बी दिस। सो फॉर दैट वी नीड टू गेट दीज डिटेल्स फॉर दैट। तो जैसे ये डालेंगे अपन, ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन क्रिएट हो जाती है। इज दिस क्लियर सो फार? देन Yeah, it's clear. if you double click on that, then it will open another screen. So this is how the login screen looks like. So once these details which you entered here are correct, okay, जो भी details आपने यहाँ डाली अगर वो correct है, सही है, there is no issue with wrong address issue and everything is correct here. Then if you double click on that, you will directly lead, next screen will be this one, okay. ये screen open होगी जहाँ पे what you need to do is you'll have to enter your ID and password. अब यहाँ पे अपने ID password होते जो भी है, ठीक है, जैसे मेरा है S21PP10, ठीक है। इन योर केस आपको भी कुछ ना कुछ ID password मिला होगा। तो once you log in through that ID and password, आप लॉग इन कर जाओगे। देखो दिस इज द मेन होम स्क्रीन ऑफ द SAP, दिस इज हाउ इट लुक लाइक, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू लॉग आउट, लॉग ऑफ, आप वापस हो गए। अब नाउ अगेन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट, वंस यू डबल क्लिक ऑन दैट टिल लॉग इन गेट कम बैक टू द सेम स्क्रीन। अगेन आपको जब भी आपको लॉग इन वगैरह लॉग ऑफ करना है, आपको इस ID पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज दैट। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, नाउ ये यहाँ तक समझ में आ गया है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yeah, it's clear. Method. Yes, Yeah, yeah. राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो किस, यहाँ पे जैसे एक लाइन दिख रही है ना आपको यहाँ पे, सिमिलर वे वी इन जनरल एज अ कंसल्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, वी कैन हैव मैक्स, लाइक इन जनरल वी कैन हैव 3 lines here. 3 lines means, so one is for development, one is for quality, one is for production. Now let's understand what is the meaning of that, what I'm trying to say. So there can be 3 different system here. मतलब रहेगा S/4HANA ही, सेम वर्जन रहेगा, ऐसा भी नहीं है वर्जन विल बी चेंज। सो S/4HANA itself will be there version, like suppose if you are using 2020 version, okay, suppose let's see if you are using the version 2020, I'll show you कहाँ पे दिखता है वो भी, let's not go to that. So just example, suppose that you are using, your company is using SAP S/4HANA version 2020, okay. So in this case you उसी particular Good evening. good evening, who's this? राहुल रैन। हाँ जी राहुल। जी जी।
Guys, बीच में डिस्टर्ब मत करो यार राहुल. Thank you Rahul for joining this session. ना कुछ डाउट हो कुछ क्वेश्चन हो प्लीज आस्क मी. ओके थैंक यू. ओके सो नाउ टॉक अबाउट. तो मैंने क्या बताया अभी, देयर कैन बी 3 लाइंस हियर. एक डेवलपमेंट की, एक क्वालिटी की, एक प्रोडक्शन की. सो इन जनरल एसएपी के अपने पास 3 सिस्टम, 3 सर्वर होते हैं. इसको बोलते हैं एसएपी आर्किटेक्चर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे समझाता हूँ मैं, चलो आपको गूगल पे और समझ में आएगा फ्लो डायग्राम से. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके सिंपल लैंग्वेज में समझता हूँ, आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ. So what is SAP Dev Quality and Production in SAP? ठीक है, read it. देखो SAP क्या होता है. SAP is usually installed in 3 servers. Okay, one is development, which is used by IT team for new configurations and designing and all. Okay, second is quality server, जो किसके लिए काम आता है, to test the developments. And last and final is the production server, जो बिजनेस यूज करता है, where business users logs in and does all the actual business transactions. इसमें किसको क्या कंफ्यूजन है मुझे बताओ पहले. अभी तक इस थ्योरेटिकल जो लाइन लिखी हुई है इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? एनीवन? Guys, don't free to ask me anything. किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी. It's fine. This is very much clear, right? Very easy Right, language. right. Usually we have 3 servers. Usually. अब that depends, आपको किसका एक्सेस है वो आपको डिपेंड करेगा. जैसे अभी मेरे पास जो है, guys understand, मेरे पास जो है अभी इसमें I have only development access. Only one system access I have. I don't have quality or production. As you can see यहाँ पे 2 आइटम और यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे, राइट? इसमें क्वालिटी और प्रोडक्शन लिखा हुआ है. Guys जो भी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Whoever is not mute, please mute yourself. Yogesh. Yeah, thank you. Okay. कहाँ पे थे यार हम? हाँ. So as you can see यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, डेवलपमेंट. वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेवलपमेंट है, एक क्वालिटी और तो हमारे पास अभी एक ही कनेक्शन है विच इज डेवलपमेंट होगी. सो अब जिसके पास क्वालिटी का भी ऑथराइजेशन होगा, इसकी क्वालिटी भी यूज होता होगा और इसको प्रोडक्शन भी यूज होता होगा, उसके पास प्रोडक्शन, क्वालिटी और डेवलपमेंट तीनों का एक्सेस होगा, या तीनों का सर्वर डिटेल्स होगी यहाँ पे. अब जब सर्वर डिटेल्स होती है तो वंस यू डबल क्लिक ऑन दैट सर्वर डिटेल्स, इसकी स्क्रीन ओपन होती है. अब जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे और आपके पास एक्सेस होगा तो लॉगिन हो जाएगा. इफ देयर इज नो लॉगिन, नो एक्सेस क्रेडेंशियल्स यू विल हैव, देन सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू लॉग इन. वेरी सिंपल लॉजिक. कोई भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी एप्लीकेशन में, कोई भी फोन में, कहीं भी आप कुछ भी लॉगिन करते हो तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक. अगर आपके पास ऑथराइजेशन होगा, आपके आईडी पासवर्ड सही होंगे, क्रेडेंशियल सही होंगे, देन सिस्टम आप में लॉगिन कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा. दैट्स वेरी सिंपल लॉजिक. करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू हियर. सो अगेन एज एन सेड, डेवलपमेंट जो सिस्टम होता है हर किसी को उसका एक्सेस नहीं होता. नॉट एवरीवन हैज द एक्सेस टू डेवलपमेंट सिस्टम. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की सिस्टम वी हैव. एंड व्हाई दिस इज की एंड इंपॉर्टेंट? बिकॉज this is generally used by IT or consultants or the ones who actually design the system or do the configuration. So configuration means that whatever as per the requirement, whatever we need or client needs, as per that we design the system for client. Correct? So जैसे in your company अगर आप SAP use कर रहे हो and अगर आपको काफी टाइम हो गया in your company, right current company, and you must have seen that some when you actually when in your company SAP जब इम्प्लीमेंट हुआ होगा, राइट, लाइक जब भी हुआ होगा 1 साल 2 साल 5 साल पहले, दैट टाइम यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ टीम केम अप इन योर कंपनी, राइट? इम्प्लीमेंटेशन टीम. उस टीम में से देयर वर फ्यू पीपल फॉर अलग अलग मॉड्यूल के अपना अलग अलग सरकार किसी का अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर. करेक्ट? सो वन ऑफ देम वर आईटी basis team. Basis team is the one responsible. Security team we say them. Okay, so security team is the one responsible for system access, credentials and all everything. So those are the people who takes care of this credentials, access, roles, authorizations, and all. Other than that, we have less like you, me. I'm basically an production planning and quality consultant. Okay, so I take care of production planning. So whatever the design we need to do, whatever we need to understand, not understand, design the process, design the thinking, testing, training, everything. That's you will do as part of production planning. Only for production planning. अब जो finance वाला होगा, that will take care finance person. Sales and distribution wala take care of the sales and distribution thing.
Material management will be taken care by consultant. So this is how we have different departments, different person who takes care of their specific module, their specific area of responsibility. Guys, clear with that? So Yes, sir. consultants has the access to development system, only consultants. Okay. Then comes the quality system. So quality system का access होता है the core team member from business and consultant के पास होता ही होता है. So consultant के पास development और quality का access होता है, full access होता है. All the system, all transactions, everything is accessible for consultant. And I'm talking about consultant, not user. Okay. Again to repeat. Second is third is production. Production का consultant के पास कोई access नहीं होता है. Consultant does not at all have access of production system because वो system users का है. Only users are allowed to log in and do the transaction on daily basis. That's it. मतलब जो आपकी कंपनी में the system which you are using right now वो system है production system. आपकी कंपनी में आपके पास इसका ऑथराइजेशन होगा जिस पे आप लॉग इन करते हो. That cannot be quality or development system. That system is production system. Clear है? कुछ confusion? Clear, sir. Correct, sir. Clear, Now, good. Thank you. So now, as I told, development system is only accessible for consultants. Quality system, can be accessed by consultant and by user as well. अब user का मतलब क्या है? Only those users who are or were, in the core team. What do you mean by core team? Core team means the team who or which was involved during the implementation of that SAP software. Like जब भी in your company SAP system implement हुआ होगा or during the implementation that there are team, there are some people from every department are allotted for that project. You will be there for that project to guide consultants कि आपकी कंपनी में आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे क्या काम चलता है, what are the requirements, how things works out, कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस आप यूज करते हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कौन सी मशीन से क्या प्रोसेस है, everything they tell to this customers, sorry, consultants, that how things are working actually. So only core team members does have the access to core team users होते हैं, उनको access होता है quality का and consultants को होता है. अभी तक I hope everything is clear. Now this is clear. Okay. So this is how we have three systems: development, quality, and production. So let's log into our system development. So in case I've already logged in. So अब जैसे ID password डालोगे अपना, it will log in. So this is the home screen of this SAP. This is the home screen wherein have all the and everything, all the T code and everything you can access through here. So for T code, what do you mean by T code now? T code basically you'll hear this word from me a lot of time actually. T code basically means is the transaction code. Transaction code means a sort digit, कुछ numeric, alphanumeric number होते हैं through which we can access the transaction. Sort key basically. So as you can see here, everything is there. Like if I talk about this one, like suppose these are options are here, like to access the things, these T codes and everything. So there are two ways to access the same thing. One is if you can go to my portfolio management tools overview. So let's not go to that. Better let's go directly to here. So this is the screen where we enter the T code. Now T code अब कैसे कहाँ आएंगे, क्या याद रहेंगे, क्या रहेंगे, that I'll tell you. And even though if you don't remember anything or you don't note it down, just go to Google, जिस भी T code, जिस भी transaction का आपको कुछ T code चाहिए, जैसे आपको material master create करना है. What is material master now? Everyone knows material master या item master क्या होता है, right? So item master is basically the part और जो manufacture आप करते हो, FG, SFG या कुछ भी, ठीक है? That is basically is the code which we have, right? So for that also, to create material master, we have so Google Pay, SAP has a very strong community on Google that whatever you want to know or कुछ आपको पता नहीं है, just go to Google, just search for it that okay, what do you want? You want SAP material master T code. Simple search material master T code, like either creation or deletion of what. So suppose you want to create a material master. So you will search here, create material master T code in SAP. ये क्या करेगा आपको directly, it will give you directly the answer.
So इस तरह से होता है टिकट लोग. So the process of material creation is carried out through transaction MM01. तो अब जब MM01 यहाँ पे आप SAP पे आओगे, यहाँ पे डालोगे अगर MM01, you press enter, MM01 पे press enter, सिस्टम आपको इस स्क्रीन पे लेके आएगा, which is to create materials. Similar way, in production we have 5 masters. One is the material master, is not production master. Material master is a very common master, जिसमें सेल्स का, क्वालिटी का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, ऑल द मॉड्यूल्स डिटेल्स सब आती है कि ये मटेरियल कितने में बिकेगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन होगा कि प्रोक्योरमेंट होगा, क्या होगा, वेंडर से प्रोक्योर करेंगे या फिर इन हाउस प्रोड्यूस होगा, या उसका टैक्स कितना होगा, प्राइस कितनी होगी, क्या नहीं होगी, कितने में बिकेगा, कितने में सेल होगा, कितना डिस्काउंट होगा, वो सब चीज़ें मटेरियल मास्टर में आ जाती है, मास्टर डेटा. ठीक है. तो अब जैसे हमने देखा था कि मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा में डिफरेंस. सो सेकंड मास्टर, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज अ बॉम्ब. So if you again go, like if you don't know what is the bomb और इसका क्या T code वगैरह है सिस्टम में, तो just write here create bomb T code in SAP. तो जैसे आप लिखोगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको दिखा देगा what is the T code for that. तो आपको याद आओगे तो बहुत बढ़िया बात है, पर इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट आफ्टर a few days if you do the practice and all, it will be very easy to remember. Like I remember a lot of T codes. I think more than 500 or so T codes I remember, like in my mind right self, just because I'm using those T codes since long. Okay. That's the reason we can remember and recall everything basically in our mind. Okay, so again, if I enter CS01, देखो create metal bomb, bomb बनाने के लिए डिटेल आ गया. Similar way, the third master is routing. If you create routing here, it will give you transaction CS01. Look, तो आपको कुछ भी याद करेंगे, it's very easy. ठीक है, routing आ गया. Similar way, if I port is machine or work center, तो work center का डालूंगा तो it will give you the work center CR01. CR01, create work center. ठीक है, and last and finally, it's production version. I'll tell you the meaning. I'm just going ahead, slowly. Production version. C223. So if you enter here C223, you will see that production version, right? This is how it is. So we have, T codes to make sure that we access relevant transaction. कि हमें क्या करना है, create करना है, change करना है, delete करना है, display करना है, whatever we want to do. Accordingly, we need to, we have T codes to access the things. So you can directly go to that particular path and location. You don't need to, look for other options and all. But still, if you want, suppose कि जैसे आप एक तो हो गया ये तरीका. दूसरा, अगर आपको ऐसा चाहिए कि जैसे आपको आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में you have only access to 5 or 6 T codes. But not everyone has every access. Like as a consultant, I have all the access. But suppose let's say you also will have all the access. I'm just telling you in your company. Suppose if you're working in your company and you have SAP, so आपको पता होगा कि you have only access to only few T codes only, not to all of it. There are only few role and responsibility you can access, right? Not everything. So suppose आपका 4, 5, 6 T code या जो भी चीजें आप access करते हो या use करते हो, that thing you can make it in favorite here. जैसे मुझे अगर अपने फेवरेट ऐड करने हैं, मुझे I don't want कि बार-बार मैं याद रखूं क्या करूं. So if I don't want to do that, I can save those T codes here itself. If you directly double click on that, you will directly go to routing or bomb or anything. So suppose in your responsibility you create masters. So what you can do, you can go to your favorites. This यहाँ पे दिख रहा है favorites. तो यहाँ पे add, change, move, delete, insert folder, insert transaction सब कुछ आ रहा है. So suppose यहाँ पे बहुत सारे folder. You want to create your own folder. Create a folder. T codes. जैसे एंटर किया, देखो यहाँ पे folder बन गया. ठीक है. अब इस folder में if you want to enter your T codes, so insert transaction. वो transaction you want to enter, suppose bomb, creation of bomb, CS01. Look, इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक टी कोड के अंदर, इस टी कोड वाले के अंदर ये आ गया, देखो यहाँ पे CS01. So if you double click on that, you don't need to enter the transaction now. आपने यहाँ पे फेवरेट सेव कर दिया इसको. In this case, you can directly double click and it will directly lead you to bomb creation. Similar way, if you want to add one more or something else, like the change of bomb, CS02, देखो change का आ गया, change metal bomb. If you want to add more for anything else, like routing maybe, then यहाँ पे routing आ गया. तो जितने भी आप चाहो, you can add any n numbers of T codes here as in favorite. Okay, this is one of the way. If you want to add your folder, if you don't want to add folder, you here directly want to add, directly go and click on transactions, or maybe suppose C223. देखो यहाँ पे वो आ गया C223. अगर आपको यहाँ पे बाहर करना है तो insert transaction C223. देखो यहाँ बाहर आ गया, ऊपर किसी फोल्डर में नहीं है कुछ भी, वो बाहर आ गया. So it's all depends upon how and where you want to do the things. So these are the few ways, shortcuts to access things. अब आपको T code याद है तो directly go here, enter the T code, which is not a big deal because after a few days you will remember that. If you want that कि मैं इसको सेव कर दूं यहाँ favorites में,
So it will still always there. अब यहाँ पे ये कहीं नहीं जाएगा unless until you go and delete it. Unless until you left click on that, if you delete it, delete favorites and change favorites something, if you want to delete and all, then you can do that. This is how it will be. Okay, I hope अभी तक सबको कुछ clear है, अभी तक कुछ का doubt नहीं किसी को. Clear, sir. Good. Thank you. Now, okay. Now let's go to the first transaction called MM01. So MM01 is the transaction to create material master, item master, part, whatever you say. So in SAP term, this is known as material master. Okay. So there are always, generally masters के 3 decode होते हैं. MM01 supposed to create material master, MM02 to change material master, देखो change material master, and MM03 to display material master, like that. Similar way, if I talk about BOM, okay, bill of material, BOM is bill of material. Okay, I hope you know everyone what is bill of material. Still we'll go into that. So creation of bill of materials is like suppose CS01 से है, तो CS02 is for change and CS03 for display. So जो भी masters है उनका ट्रांजेक्शन क्या होता है, अगर स्टार्टिंग जैसे MM01 है तो अगर 01 for create है तो चेंज के लिए 02 होगा, डिस्प्ले के लिए 03 होगा. It will be always like that only. Similarly, if I go for routing, work center, anywhere, if I go for routing, like say CA01, CA01, then CA02 for change, and CA0, as I said, CA03 for display. As you can see, display routing. Similarly, if I go for work center, then CR01 for work center creation, CR02 for change, sorry, CR02 for change, and CR03 for display. Okay. Similar way for this one. So for production version, we have only one transaction. Okay, and for that we have all these things here itself, like create, delete, copy, display, everything we can do it here only. Only one transaction is for production version. So this is how it is. I hope this is clear so far. Guys, any questions to anyone as of now? It's clear, sir, for me. Yeah, good. What about others? Rajesh, Yogesh? Yeah, it's clear for me. Sir, very good. Yes, sir. Yeah. Yes, Clear all. Yeah, it's clear. Okay. Thank you, Rajesh. What about others? Even though कुछ और किसी को doubt है तो please speak it up. But I am going ahead. This was the basic thing, the basic shortcuts that how to No, unlock sir. this recipe. ठीक है. Now let's enter MM01 to create a material master. So to create a material master, once you click MM01, यहाँ पे आता है. Now here there are two ways. So these are 3 fields here. जहाँ पे हमें data डालना है. One is the industry sector. So what do you mean by industry sector? Very simple logic. आपकी कंपनी का या क्लाइंट का whatever the industry they will fall into, that will be the industry sector. It could be chemical, it could be life science, it could be IT, it could be electric, it could be automobile, it could be anything basically, tire, tube, manufacturing, anything it could be there, right? So those that value we enter here. So in this list there are many are already there, and this list can be added. This is not that कि suppose ऐसे मेरी कंपनी कुछ footwears वगैरह की है, okay? My company is basically a footwear, right? And there is no option of footwear right now. So it doesn't mean that हम उसको add ही नहीं कर पाएंगे. No, it is not like that. So these values are entered by us only. So as a consultant, we understand कि हमारी जो client है या फिर आपकी company है जो भी है, what industry they fall into. Then वो value हम add करते हैं यहाँ पे. So these values are editable and non-editable. Not from here, but as a consultant we do that from backend. Okay, let me tell you how. So this one T code spiral. I'm not going into that. अभी ये हम last में पढ़ेंगे configuration. Or if you want, I can showcase it to you right away. Better we go right away. Okay. So as of now, let me tell you in parallel how we do that. Industry sector. Material master. Here it is. Industry sector. Look, ये दिख रहे हैं यहाँ पे? ये दिख रहे हैं वहाँ पे अपन को? Yes. डॉक्टर में ये दिख रहा है देखो. कुछ Yes. नया तो नहीं दिख रहा. Right. But Yeah. if I want to add now footwear. So what I'll do is create a new entry. यहाँ पे ऐड करूंगा footwear. अच्छा इंडस्ट्री सेक्टर में आ गया सपोज जी. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा footwear. ठीक है. Field reference हो गया 301. ऐड कर दिया मैंने. सेव कर दिया मैंने.
So I come back here. Let's say I'll see here. Look, यहाँ पे मुझे फुटवेयर दिखेगा. MM01. So I go back here. दिख रहा है कहीं किसी को फुटवेयर यहाँ पे? दिख रहा है सर। लास्ट में है। दिख रहा है? हाँ सर Yes, लास्ट sir. में है। Yes, sir. Sorry, who is that? Yeah. So footwear दिख रहा है, right? So it means that whatever we have added here in the configuration, in the designing and all, that will be displayed in this one now. So this is the part. This part जो part होता है ना, this is what is known as configuration, designing part of the system. Like based on the client requirement and all, whoever has the authorization, they does that only. This is going the back end. वैसे बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है. So what I can do, I can delete that. So let me delete the extra, which is not at all useful. तो बहुत ज्यादा ही फालतू हो गया है. So if I delete, suppose this many, if I come back here, go back and refresh it, enter, look यहाँ पे मेरे को बहुत कम दिखे, because I've deleted everything जो extra थे मेरे को लगे जो, right? So footwear we have in our case, footwear में डाल दिया हमने. अब होता है material type. So what do we mean by material type, guys? What do you know by material type? How many material types we do have in general in our company? Do you know what is FG, what is SFG, what is packaging material, what is raw material? आइडिया है किसको क्या होता है FG, SFG, raw material, packaging material, service material, Yes, spare sir. parts, consumables, क्या होते हैं ये सब? These are material types, guys. इसको material type बोलते हैं कि ये particular material है वो किस type का है. Is it a finished good? Is it a semi-finished good? Is it a raw material? Is it a consumable item? Is it a spare part? Is it a service material? Is it a raw material? Is it a packaging material or what? So इस तरह से जो अलग-अलग types है उनके यहाँ पे देखो नाम दिखेंगे आपको. देखो spare part, semi-finished good, finished good, production tool, semi-finished good, trading goods, spare parts, raw materials दिख रहे हैं? Yes, sir. मैं तो नहीं बोल रहा ना? Yes. Correct. So these are known as material types. Okay. So material type basically means that what kind of material we are going to create a master of. जिस particular material type का हमें master बनाना है वो हम यहाँ पे डालते हैं. Like अगर आपको FG का master बनाना है, finished good का master बनाना है, so होता क्या ना, material master हर एक material का अलग-अलग बनता है. Like अगर आपको raw material का बनाना है तो raw material के लिए अलग material type है ROH और raw material का. वो आप सेलेक्ट करके raw material का item code open करोगे. Similar way packaging का बनाना तो packaging का item code open करोगे. Semi finished good बनाना तो semi finished good का item बनाओगे. Finished good का बनाना तो finished good का item बनाओगे. So this is how it will be. So all 4 types of category और जितने भी categories होती हैं हर एक का अलग-अलग item code open होगा. मतलब even though you know in your product to manufacture suppose car or something in your company, whatever the product you have, so for that if you use 10 raw materials, okay, then you will have to create 10 material master of raw materials, different. Agree with me? Yes, sir. कुछ और किसको? That's a very simple logic. Like if you use 10 raw materials to manufacture your product FG, then आपको 10 product master open करने पड़ेंगे, right? Yes. Good. Similar way आपका एक अगर 10 raw material है, 2 पैकेजिंग अगर प्रोडक्ट यूज करते हो, पैकेजिंग आइटम यूज करते हो, 2 पैकेजिंग मास्टर ओपन करने पड़ेंगे. SFG अगर एक आया है तो आपको एक SFG ओपन करना पड़ेगा और एक FG है, ठीक है FG. तो कितने मास्टर हो गए अपने? एक FG का मास्टर मटेरियल, एक मटेरियल कोड खुल गया, एक SFG का खुल गया, 2 पैकेजिंग के खुल गए और 10 रॉ मटेरियल के खुल गए. तो ऐसे 10-15 मटेरियल आपको अलग-अलग ओपन करने पड़ेंगे, राइट? Yes. सबको क्लियर है कि क्या मतलब मटेरियल मास्टर का, क्यों ओपन इतने सारे ओपन कर रहे हैं? Clear है? Good. So let's create a finished good suppose. So okay. Press enter. देखो यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको मैं. ये जो फील्ड है ना, यहाँ पे हम कुछ why I'm not entering anything in this. There are 2 reasons for that. Let me tell you what that reason is. So if you click SRO, look. So कोई भी जो मटेरियल मास्टर या कोई भी मास्टर होता है ना, उसका एक नंबर रेंज होती है. What do you mean नंबर रेंज? कि आप पर्टिकुलर मास्टर का क्या, जैसे मटेरियल मास्टर है अभी, तो मटेरियल में FG भी है, SFG भी है, मतलब फिनिश गुड भी है, सेमी फिनिश गुड भी है, रॉ मटेरियल भी है और पैकेजिंग मटेरियल भी है. तो अब हाउ वुड यू गेट टू नो कि ये फिनिश गुड है या फिर सेमी फिनिश गुड है या फिर रॉ मटेरियल है या पैकेजिंग मटेरियल आइटम, किसका आइटम है? सो व्हाट वी कैन डू बेस्ड ऑन द मटेरियल टाइप, हम ना अलग अलग नंबर रेंज दे सकते हैं.
Like suppose you want to give a number range like starting from like 1 starting from 1 or 5 to FG, starting from 1 to SFG, starting from 6 to R raw material, starting from 9 to packaging material. या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फिर आप ऐसे दे सकते हो starting from 1 to FG, starting from 2 to SFG, 3 to raw material and 4 to packaging material. तो what will happen, जब भी आपका आइटम कोड बन जाएगा तो उसके बाद में अगर आप कोई भी मटेरियल कोड दिखाएगा ना आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सपोज 40001 या फिर 1 से आपको दिखेगा, जैसे ये मटेरियल है आपको, अगर आपको बाद में कोई दिखाएगा ना कि 10090, तो क्या समझ में आएगा आपको? यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एफजी आइटम कोड. हाउ विल यू गेट टू नो? बिकॉज दिस मटेरियल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. करेक्ट? Similar way, this is one example. Similar way, this is not the only way. We can, give it an alphanumeric as well. So this is not necessary कि हम यहाँ पे 1 और numeric value देंगे. If we want, we can give it alphanumeric value as well. So what do you mean by alphanumeric? Alphanumeric का मतलब हो गया that you want to give like initially FG देना, या आप नंबर देना चाहते हो suppose starting with FG कि FG 0000001 ऐसा. तो क्या होगा जब भी आपका आइटम कोड वो कैसे बनेगा? यहाँ पे 5 जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ पे क्या आएगा? FG लिखा हुआ आएगा. फिर आएगा 0000, यहाँ पे आएगा 1 या 40 जो भी है. तो FG को देखते आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एन FG कोड, नॉट किसी और मॉडल का नहीं है. दिस इज एन फिनिश गुड आइटम. करेक्ट? सिमिलर वे, अगर आप SFG का आपको नंबर रेंज बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? SFG 00001 लाइक दैट. सिमिलर रॉ मटेरियल ROH या RM जो भी डालोगे, रॉ मटेरियल का RM डाल दिया आपने, सोट की पैकेजिंग मटेरियल का PM डाल दिया आपने. तो जैसे PM डालोगे तो आपको समझ में आएगा पैकेजिंग का आइटम कोड है. या अगर आप वैसे नहीं डालना चाहते हो और आप नंबर रेंज देना चाहते हो न्यूमेरिक वैल्यू पूरी, तो आप ऐसे देख सकते हो कि 1 is for FG, 2 is for SFG, 3 is for raw material, similar way, and 4 is for packaging material. This is also one of the way. So companies to company, this thing varies कि कौन सी कंपनी क्या चीज से नंबर रेंज रहना चाहती है. क्लियर है? Is there any capping on number of digits? Sorry, is there any Capping on number of digits? Like, is there something specific yes that yes we yes have to? Oh, I'm sorry, I forgot that. Yes, thank you. Very good question you asked. So yes, there is a limitation to number range. So we can have maximum 18 number range. How do I go to know that? वही बताऊँ चलो मैं आपको. तो यहाँ पे जो number range है ना ये, this is the limitation is 18 number range. 18 digit number range you can use. So these zeros are 18. So out of 18 you can use anything. अब एक यहाँ पे जैसे 8, 9, 10 कुछ तो use किए हुए हैं. So you can use any number range out of 18. If you want to use all 18, तो what you can do, you can यहाँ पे आपका 1 आ जाता, यहाँ पे 1 आता, and बाकी सब 00000 ऐसे रहते हैं. फिर यहाँ पे आता 999999 या फिर 1999 like that. So तो इस तरह से 18 is the maximum. We can use even 1, Yes. 2, 3, 4 like that. Right? Yes. 18 is the maximum we can use that. Okay. Now, how will you get to know that? Let me tell you one more method. This is one more short key and technical way, I would say. So, किसी भी field का, let's understand this. Suppose I come here. Just don't go into detail. Let me explain to you what I'm trying to say here. Okay. Suppose any of the field you want to see that उसका technical limitation क्या है? So you know what you need to do. किसी भी field का any of the field in SAP, if you want to know the description, like suppose this field all material number, if you do not understand the meaning of all material number, what will you enter in this? What you can do, you can select command function and F1 together. If you press function button and F1 button together, like function and F1, then system will open this pop-up screen. Look, जैसे मैंने अगर function दबा के F1 अगर press किया है, then this screen will open. Okay, guys, allow me a second. Yeah, sorry. So, second. Yeah, okay. So what I told is, so for any field, you want to see the description कि उस particular field का meaning क्या है. Like what is the use of that field, what is the description of that field. Like so किसी भी field पे आप जाओगे, if you enter F1, तो यहाँ पे अलग-अलग open होगा. तो जैसे उस field, what is the meaning of division, like जैसे यहाँ पे क्या field है? This field is division. Look, ये, right? If you come inside and if you do function F1, this will tell you what is the meaning of division. So division means that a way of grouping materials like this. So उसका use क्या है? देखो use बता रहा है, प्लस example भी बता रहा है. So there are, in SAP, this is a very good functionality SAP is given. जहाँ पे what you can do is, आप अगर function F1 बटन किसी भी field पे आप जाके click करते हो, तो it will tell you
the definition of that field, use of that field, and the example कि अगर आपको example से समझना है तो what would be the example of that. This is one way. Good. For any of the field, कहीं पे भी जाके try करना आप ये चीज. This is जैसे मैं यहाँ पे आके try कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा what is the meaning of gross weight, उसका use क्या है. ठीक है, तो हर जगह एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन जहां पे पॉसिबल है वहां पे एग्जांपल होगा. तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन हर जगह पे होगी. Okay, now what I was trying to say here is that, so do f function f1. This button you see here, this button technical information, this button, this one. This button contains the technical information. What do you mean by technical information is, to click on that, it will lead you to this one. Look, to double click. Okay, let me tell you again if I'm going fast. Function f1 first, then you don't want to read, you want to see the technical information, means you want to see the कितनी का length है, कितनी का limitation है उसकी. So what you can do, here is the field name, technical field name of this. So material number जो ये है ना, ये इसका technical name backend में जो है वो ये है MATLR. So backend में जो programmers है, developers है, उन लोगों के लिए काम की चीजें ये, not for us. Okay, but can you see this one, data element? If you double click on this, it will lead you to this one. देखो, so the length for material master could be 40. Okay, the digit नहीं, तो number there could be of 40, but ये गलत है यहाँ पे. This is not updated. Generally, what I told you was 18 digit we can use it. Okay, 18 digit only we can use it in this, not 40. This is wrong. Here this is 40. यहाँ पे भी ज़्यादा दिखाएगा शायद. So दिखाएगा यहाँ पे 40. Good. So suppose if I talk about, take an example of description. Okay, material description. So even though material description also we can enter only 40 digit, 40 characters only. That's it. तो ये रहा डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा आप डाल सकते हो, और ये रहा उसका लेंथ, कि कितनी इस लेंथ की लिमिटेशन क्या है, field की लिमिटेशन क्या है. That's what it shows. I hope this was clear to everyone. These are shortcuts to know the things, and you should know that. That's why I'm just telling you. अब use करना नहीं करना, it's on you. Okay, so let's go ahead. Go back. So यहाँ पे हमने डाला. So in the case of internal number range, you don't need to enter anything here. So जो भी number range वहाँ पे डालोगे, system automatically वो number range pick करेगा और आगे लेके आ जाएगा. ठीक है, so if you press enter, अब आपको यहाँ पे आते हैं views. What do you mean by views? Views means that, okay, what exactly the details you want to enter for that material master. So suppose basic data means that basic information. So we'll go to that. So for, let me tell you, guys, please remember or note it down somewhere. For FG and SFG material, whenever you create a FG material or SFG material, the important views are, note it down. Always these are the views which will be useful. For FG and SFG I'm talking about right now. Okay, finished good and semi-finished good. Basic data 1, sales 1, 2, 3, sales text if needed, MRP 1, 2, 3, 4. Go down, then work scheduling. These are quality. Yeah. Please note it down somewhere. Basic data 1, sales के view आएंगे. Sales का क्यों आएगा? Let's understand the logical answer of that. So basic data means that basic is like common for everyone. Like what exactly is the description of the material जो आप open करोगे, या फिर what is the unit of measure, what is the gross weight, net weight वगैरह क्या होगा. So that thing we can enter in the basic data 1. Sales means sales view हमेशा उन material के लिए आता है which we sell to customers. So generally we sell FG, or some companies also sell SFG as well. That depends. Not every company, but some companies sell SFG as well. So in the case of SFG also, if need, we can use, sales views. Okay, that's why we use sales views. But in the case of RM and PM, raw material and packaging material, the material which we procure from vendors. So generally आपको पता है कि finished good और semi-finished good हमेशा company में in-house produce होता है, right? And raw materials and packaging materials हमेशा हम procure करते हैं vendor से. Is it correct, guys? Is it correct understanding? Yes, sir. Yes, Good. sir. Good, very good. So that's why we do not sell those things. So that's why we don't have these three views for raw material, packaging material. But हम raw material and packaging material purchase करते हैं, right? So that is why we select the purchasing view for that. So for that, the purchasing views is mandatory and purchasing order text is mandatory. That is the difference. So again to repeat, as of now for FG and SFG, basic data 1, sales के तीनों views, sales text if needed, MRP or 4 views. Work scheduling is very important. This is really very important view, guys. Work scheduling view. Then general data 1, 2, quality. If you want to do quality, then quality view, accounting and costing. ये काम आते हैं FG and SFG में. I hope you noted it down somewhere. By the recording तो हो ही रही है, तो you can see it later. But I would say keep a pen, copy or something.
you. So, sir, You can could you please scroll down a bit? Like Sure, sure. after general data one. Yeah. So, yeah. QM accounting 1 to costing 1 to. Okay. Right. Got that? Yeah. Thank you. Okay. Now, again to repeat, in the case of RM and PM, raw material and packaging material, we don't need these three views. So we need basic data one, then we need purchasing and purchasing test. These two are added. So basic data one is common. Why this is common? Because basic data हर किसी के लिए होता है, right? Raw material का भी कुछ ना कुछ description तो होगा ही ना. Raw material का कुछ ना कुछ basic unit of measure तो होगा ही हो ना. कि वो किस में measure करते हैं हम उसको. उसका कुछ ना कुछ gross weight, net weight तो होगा ही होगा. Basic. FG का भी कुछ ना कुछ होगा, SFG का कुछ ना कुछ होगा, packaging का भी कुछ ना कुछ होगा. That is why basic data is very much mandatory and very much common for all the material types. Okay? But sales are important for the materials which we sell. और कौन सा मतलब हम सेल करते हैं इन जनरल? FG और SFG, करेक्ट? रॉ मटेरियल और पैकेज मटेरियल कभी सेल नहीं करते, वो प्रोक्योर करते हैं हम. और जब प्रोक्योर करते हैं, इट मींस दैट वी परचेज देम. तो फॉर द जब हम परचेज करते हैं, दैट इज व्हाई द परचेजिंग व्यू एंड परचेजिंग ऑर्डर टैक्स इज मैंडेटरी. सो दिस इज लॉजिकल आंसर. यू डोंट नीड टू रटने की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स. दिस इज लॉजिकल आंसर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. Is this an FG material code you are opening or SFG? If FG or SFG, it means that we can sell this. That's why sale is important. We cannot purchase it. That's why purchase is not important. MRP is also important. These are common. MRP 1, 2, 3, 4 is also common. Work scheduling is only important for FG or SFG. This we do not require for RMPM. That's why we do not select this. So this is again, purchasing is important. This is important. Again, these are common. These are common. This is not required. These are common. तो बस ये डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है मोटा मोटा? परचेसिंग व्यूज RMPM के केस में आते हैं एंड वर्क शेड्यूलिंग FG SFG केस में आता है. बस दिस इज द डिफरेंस गाइस. सबको क्लियर है अभी तक कि कौन से व्यूज कब कब सिलेक्ट करेंगे, किस किस मॉडल टाइप के लिए सिलेक्ट करेंगे हम? Yes, sir. Yes, it's clear. So what we are doing right now? अब now you tell me which material type we are getting right now? Finished material. So what So, views? SFG. Finished material. basic data one, Right. sales, Sales all three. Sales all three, Sales one, right. Sales data two. Remove purchasing and Remove select sales purchasing. text. Remove MRP one. Should I Sales remove this text one as also? well. yes sir. Okay, sales text. Yes, Should we sir. remove this? Yeah, remove this. Yes. Yes, Okay. sir. Then what about this four? These all four, yes. What about these? Yeah, all these. Work And scheduling, anything? work scheduling. Yeah. Work this we need to scheduling add. one more. This is Yes. important as well in case of FG and SFG. This is not important, very important, guys. Yes sir. Really very important field we have. Okay, so this is all good. Thank you. So after doing that, click on continue. Then system will ask you, the org structure. At which company code, what is our plant, what is our storage location. Now, what do you mean by this enterprise structure? Do you know what is the meaning of enterprise structure, guys? Nahin? No, no. Okay. Chalo, let's understand this. Oh. Sure. Again, let's read it. Enterprise structure is the system representation of your business structure. इससे क्या समझ में आया? चलो और पढ़ते हैं. SAP has a number of organization unit. ये इससे नहीं समझ में आएगा. ठीक है. इसको समझते हैं. इससे समझ में आएगा. चलो. Let's open this in a new tab. इसको समझते हैं. This one. Okay. दिख रहा है सबको? Yeah. Okay. इससे क्या समझ में आया? देखो ये क्या है? दिस इज अ कंपनी स्ट्रक्चर. कंपनी स्ट्रक्चर मतलब कि आपकी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ऊपर आपकी कंपनी. तो कंपनी जब SAP में आप देखो, अब कोई भी कंपनी होती है, राइट? अब कंपनी का है ना कुछ एक कोड होता है सिस्टम में. मतलब आप कुछ ना कुछ कोड असाइन करते हो. दैट इज नोन एज कंपनी कोड. ओके. तो कंपनी कोड मीन्स एक 4 डिजिट का कोड हम देते हैं. ठीक है. दैट कोड इज नोन एज कंपनी. जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे. थोड़ा मैं जूम करता हूँ. बहुत ज्यादा जूम हो गया. ओके. कैन यू सी दिस वन कंपनी कोड? Yes sir. देखो यहाँ 4 डिजिट का दिख रहा है 1000. Yes, sir. तो कंपनी कोड
are always given in the 4-digit only. Any number, any 4-digit number you can give it. So generally we give, either 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, something like that. So initially we start like that only. The 1,000 is the company code we can give. This is just a number, technical number. So suppose आपकी company है Tata या anything, any small company या कोई भी आप नाम ले लो आपका. Give me any company name, guys. आपकी company का नाम बता दो कोई भी. Chita Group. Where are we today? Easy बताओ यार, इतना confusion मत मुझे Samsung, confuse. Samsung. सैमसंग ले लो यार, टाटा ले लो, कोई भी ले लो. जैसे सैमसंग है अभी, तो सैमसंग कंपनी आपकी कंपनी, यू वर्क इन सैमसंग, राइट, सपोज, ओके. सो इफ यू एंटर हियर 1000, you will give the company code as 1000 for Samsung. Below Samsung you will have the plants and all. तो सैमसंग क्या होगी, कंपनी कोड होगी, एक कंपनी होगी सैमसंग, राइट. सो उस कंपनी को हमने नाम एक 4-digit नंबर अलोकेट कर दिया, विच इज 1000. बिलो दैट यू विल हैव प्लांट्स. तो कंपनी के अंदर प्लांट्स होते हैं अलग अलग, राइट. Yes. सही कह रहा हूँ मैं. Below company we have different plants, right guys? Right. Good. So company के अंदर we assign the plants. So what do we do? Suppose in Samsung we have, like in specific, let's talk about only Delhi or something. So in Delhi for Samsung we have 3 plants. Or in India, let's take an example that we have only 3 plants. Plant A, plant B, plant C. Yeah, let's give the name. That plant Delhi, Noida or Gurgaon. Let's take an example, okay? The Delhi, Gurgaon and Noida, we have 3 plants in of Samsung. What we can do for plants, we'll have to create 3 plants now, and that we have to assign to company code. So company code बनी, company code के अंदर में हमने क्या किया, 3 प्लांट बनाए. जो आपका ये 2 बनाए, चलो इसी के हिसाब से समझते हैं अपन. 2 बनाए हमने, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लांट. This is the plant. Same plant also is defined in 4-digit code only. So हमने क्या define किया, suppose 5,000. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ 5,000 and क्या लिखा हुआ है, 3,000, 5,000 जो भी है. So whatever it is, so give any 4-digit code, 1,000, 2,000, कुछ भी दे सकते हैं. तो प्लांट ए को हमने दिया suppose 1,000, प्लांट 2 को दे दिया हमने 2,000. Okay, so we can give 2 different plants, like plant A is for Delhi and plant B is for Gurgaon. So 2 plants we have created below company code, and then up for each plant we will have storage location, right? What do you mean by storage location? The warehouse, correct? FG store we have. RM store we will have, packaging store we will have, safe finish goods store we will have, consumables we have. ये सब स्टोर होते हैं ना, अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस, वेयरहाउस होते हैं कंपनी में अपने प्लांट के अंदर, जहाँ पर Yes, sir. मटेरियल. Yes, sir. Yeah, exactly. There it is. Correct. So first is the company code. Below company code we have plants, and under the plant we have storage locations. Storage location means where we store the materials, and that is also 4-digit. So suppose for FG we want to create one storage location for FG. So we gave the name, suppose 0010. हमने ऐसे नंबर दे दिया 0010 करके for FG, 0020 for SFG, 0030 for raw material, sorry, 0040 for packaging material, और 0050 for consumables. जैसे मैंने 5-6 जितने भी, like we can give any number of, I'm just giving you an example here. So like this we can give जितने भी हमारे पास storage locations होंगे, जितने warehouse होंगे, जितने stores होंगे, storage location के, that we can create and we can assign to below plant. So that is the meaning of guys, storage location. देखो यहाँ पे ये रहा, the yellow one. दिख रहा है यहाँ पे? Storage location 1, 2, 3, 4, 5 like this. So this is what the meaning of org structure. So ये जो structure होता है ना, ये SAP में बनता है. The structure when you implement any software, SAP in any organization, so this is very basic thing we create. We create the company codes and all these things for a company. So suppose, let me give an example here. So in this case, what I'm taking an example is 1710. Because I have बहुत सारी companies, देखो अलग-अलग companies बनी हुई है. So in this case, my company is suppose 1710. What is का मैंने जो example लिया that I took for 1710. Plant, the same plant I've taken is 1710. In a storage location, there are how many? Let's see how many storage locations we have. So we have under 1710 plant. Let's not go to this. 1710 कहाँ पे, जहाँ पे आप देखो ये plant होता है, ये storage location. Let's go to 1710. ये रहा. So कितने हमारे पास, देखो ये रहे, इतने सारे. Starting from here, here many. So below one plant only, same plant, एक ही plant के अंदर हमारे पास बहुत सारे storage location है. So 171 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, S, M, N कर दिए. Okay. Suppose this is my FG store. So what I'll do for FG, I will assign this FG store location 171A. So इस तरह से मुझे define करना पड़ता है. अब what is sales organization? Sales organization is nothing but like from which organization we sell. So plant के लिए वही बता, कोई हमारे लिए इस plant के लिए हमारे पास एक बना हुआ है. Domestic sales. So there can be two generally, domestic sale and export sale.
कि मतलब हम कहाँ सेल कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं. Okay, that is the meaning. So in general, what is the most important thing is company code, plant, and SOI location creation. This is really very important, guys. This is very basic thing which we need to create and set up in system before creating any master and all. So metal master वगैरह सब बनने से पहले ये सब चीजें सेटअप हो जानी चाहिए सिस्टम में. Like generally we have to do that. So in this case, we already have the setup. So we need to enter these values. Click yes. Yes, we will go inside. Now here we need to enter. The first thing is that what is the description? What is the material code? देखो material number automatic आ गया. जो भी नंबर रेंज हमने असाइन की होगी उस नंबर रेंज के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर रेंज ले लेगा. बट व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? इज दिस अ कार, बाइक, किसका प्रोडक्ट है? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? दैट डिस्क्रिप्शन वी कैन गिव. सपोज आई वांट टू गिव इन या रोल्स रॉयस. लेट्स गिव द बेस्ट वन हियर. एग्जांपल ले तो बेस्ट लेते हैं. So suppose I have given the Rolls Royce Ghost maybe. So this is my car which I want to create. This product is of this car Rolls Royce. Okay. अब इसको मैं किस में मेजर करता हूँ? Each पीसेस में मेजर करता हूँ, राइट? कि एक पीस है, दो पीस है, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी कितनी है. So that's this is my unit of measure for that. ठीक है. इस मैं किसी और एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, मैं जैसे मेरे SAP इंप्लीमेंट करने से पहले if I had in another software और उसके अंदर I already had different number for this car as a product for this product. So I can give that number here. मतलब old material number मतलब old system में suppose इस material को मैं बोलता था 1 2 3 4 5 ऐसा. Example I'm taking as here. So that number you can assign in here. Like in this case, if you want to link that what is the old number and what is the new number. So you can search the material even though you use the old number because आपको generally old number you are habitual to that old number. So you will easily remember, आपको याद रहेगा old number. But to remember new number and all, it will take some time. Correct? So that's why you can link that so that by using the old number also you can सर search वो the- मटेरियल जो डाले वो न्यू नंबर है क्या? 780 ये मैंने नहीं डाला है. हाँ, this is new number. This is you know वो अभी मैंने बताया ना आपको number range. ओके ओके वो number range से automatic system pick करता है. जैसे अभी Okay. 6 आया. If I save this example लेते चलो. जैसे अभी 6 आया ना. If I'll create one more, like suppose मैंने एक बनाया, मैं दूसरा बना रहा हूँ एक और. Let's create a next any example के लिए बता रहा हूँ. वापस क्लिक करते हैं. It's text. Scheduling. Single. Quality. Costing and costing two. देखो क्या है यहाँ पे. बढ़ गया नंबर. अगला 78062 था, यहाँ पे 63 हो गया. मतलब whenever you create a material code और नेक्स्ट मटेरियल आप ओपन करोगे, नया बनाओगे, तो सब ऑटोमेटिक देख नेक्स्ट नंबर. ओके. So again, let's give our number. Rolls Royce Ghost. So this is it. Each. अब यहाँ पे देखो ये जो बटन दिख रहा है आपको, each ये जो सर्च का बटन दिख रहा है बैकएंड में. This means जहाँ पे भी ये बटन दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वैल्यू है. तो आप उसी में से सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन नॉट एंटर एनीथिंग लाइक रैंडमली. जैसे मैं यहाँ पे XYZ एंटर नहीं कर सकता कुछ भी. यू नॉट अलाउ मी टू गो अहेड. ये बोलेगा ऐसा कुछ वैल्यू है ही नहीं. दिस इज नॉट क्रिएटेड. बट इन दिस केस, इन सच केसेस यू विल हैव टू एंटर द वैल्यू व्हिच एग्जिस्ट इन दिस वन. तो ईच जो मैं एंटर कर रहा हूँ अभी, दैट इज एग्जिस्टिंग इन दैट. आई नो दैट दिस एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट. दैट्स व्हाई इट विल अलाउ मी टू गो अहेड. ओके. Yeah. So, but in this case, suppose यहाँ पे कोई बटन नहीं है बैकएंड में, it means that this is a normal text field. यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो XYZ. जैसे आपका कोई भी existing वर्ड नंबर जो था आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे. It will accept that. कोई भी मना नहीं करेगा ये. बट जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन वैल्यूज होती है, जहाँ पे भी यहाँ पे F4 बटन वगैरह होता है, देखो जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सर्च बटन है, यहाँ पे भी सर्च बटन बैकएंड में, इस पर आप क्लिक करते हो, सिस्टम आपको एक स्क्रीन ओपन करता है कि दैट उस पर्टिकुलर मटेरियल ग्रुप में क्या क्या वैल्यूज आप डाल सकते हो. तो दीज वैल्यूज एज आई टोल्ड यू फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर, ये वैल्यूज हम खुद डालते हैं. मतलब वी डिजाइन दैट वैल्यू कि क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए यहाँ पे. बेस्ड ऑन द कस्टमर एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट वी आस्क देम कि क्या क्या मटेरियल ग्रुप, क्या कौन से मटेरियल ग्रुप आपके हैं यहाँ पे कंपनी में. दैट वैल्यूज वी टेक फ्रॉम देयर एंड देन वी एंटर, वी क्रिएट इन द कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स हाउ वी डू दैट. ओके. And whenever we have text field or we don't have anything, you know, in the backend, so there we can enter any value, as I said, like we enter anything here random. So let's give a logical number, maybe this one. Okay. Then one more important thing here to remember here, wherever you see this button, wherever you see this tick box, this tick box, this one, this. Yes. When you see this tick box, the right checkbox button,
जिस भी फील्ड में, in any of the field, you see this kind of sign in the field, that means that field is mandatory. What do you mean mandatory is? That you will have to enter a value in that field. Like जब तक आप उस field में value नहीं डालोगे, it will not allow you to go ahead. It will give you error. Look, जब मैंने आपको कुछ डाला, if I press enter again and again, क्या error दे रहा है मुझे? Fill out all the required field. मतलब जब तक आप Same as those asterisk marks while filling any form, right? Exactly right. This is the high, exactly that one. Star mark वाली field है ये. If required. Simple. So there, if I enter something here, it will allow me to go ahead. अब मेरे को जहाँ जाना जा सकता है, कोई इशू नहीं, मुझे कहीं रोकेगा ही नहीं है. जैसे यहाँ पे आ गया देखो फिर ये. जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे मुझे रोकेगा ही रोकेगा. It will not allow me to go ahead, back, front, कहीं भी नहीं जाने देगा जब तक मैं नहीं जाता उसमें. ये भाई रुक जा, फंस गया मैं. तो ये समझ में आया अभी तक कि हमने यहाँ पे दो चीज डाली, ठीक है. देन नाउ नेक्स्ट फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेक्चर. अभी तक आई होप एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू से. सो देन विल अंडरस्टैंड नाउ द बेसिक डेटा वन एंड जो भी हमारे काम की, प्रोडक्शन की काम की चीजें हैं. तो सेल्स वाले हमारे काम की नहीं है, सो दैट वी डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट इन रियल टाइम. ऑल्सो वी ओनली टेक्स केयर ऑफ दीज फील्ड्स, MRP 1, 2, 3, 4 एंड वर्स्ट सेलरी. ये 5 फील्ड हमारे काम की है. तो इन 5 को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लाइक टुमारो. ओके, Okay, sir. MRP 3, 4 and Yeah, worst okay, sir. this will understand Oh. next lecture. अभी तक आई It होप was really good session, sir. It was a practical approach, so understanding was quite easy. this is how it will gonna go. like अब से आपके लेक्चर Yeah. सारे ऐसे. So initial lecture were completely, like this theoretical only. That's why we were going theoretical only. But now all this lecture, everything will be practical only. Like we'll share the screen, we'll understand things, we'll understand every meaning of each and everything and all. Then we'll go ahead. So this is how it will be. Then you'll like get to learn a lot of things. Okay, I think now to understand, like Subham, I think you joined first time, I think today, is it? बाकी सबको तो चलो मैं देखा है, जानता हूँ. Subham is the new guy, I think. Subham, hello. Yeah, शायद पता नहीं. ठीक है guys, then I got the attendance. Thank you. Bye bye. Take care. Good night. Good night, sir. Thank you so much, sir. Good night, Good sir. night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Yeah. Thank you and good night. Thank you, Rajesh. Bye. Good night, sir. Yeah. Good night, सर Pooja. थोड़ा हिंदी में ज्यादा लिखिए, थोड़ा समझ नहीं आता इंग्लिश में. भाई बोल दिया करो बीच में यार. I'll understand and explain that right away. लास्ट में चीज मत बोलो. आपको लगता है कहीं पे समझ में नहीं आया तो जैसे ही मैं बोल के बंद होता हूँ ना, मतलब बीच में मत टोका करो. लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने कुछ बोल के रुका हूँ अगर, उस टाइम बोल दिया करो कि सर समझ में नहीं आया, तो आप हिंदी में बता दो. I'll explain it to you. है ना? ओके सर. ठीक है यार भाई. ओके, धन्यवाद.